The visual system. The sense of vision is one of the most important senses, and this sense is the one which is most often studied in the study of perception and in experimental psychology. Structure of the eye contains a sheet at the back of the eye which is called retina. The retina has rods and cones which are light sensitive pigments, and the light is focuses the image on the clearest point on the retina, which is called fovea. Now, from that point and from the image on the retina, where does the information go? That's the beginning of the visual system, and the visual system continues to the brain before you can have an experience of a visual object or you can have vision. One more point about the retina. Sometimes, as we move our head to focus more clearly on something on our fovea, the clearest point of vision in the retina, there are other things in our vision as well. I'm looking at a certain object, or I'm looking at a person's face, or I'm looking into a camera. There are peripheral vision also. They are also falling on the retina. You are aware of them, but in order to see them clearly, you will probably move your head to right or left to actually see the object that you notice are there in the peripheral vision. So now the information has reached the eye, the retina, and where does it go? Through the optic nerve, it goes to the brain. When the signals emerge, they are carried to the brain through the optic nerve. Sometimes, when we experience visual problems, the problem can be in the brain area of vision, or it can be in the optic nerve. So, that has to be studied to see why someone is experiencing problems in vision. The cornea and lens at the front of the eye and the receptors and neurons in the retina lining the back of the eye shape what we see by creating the transformations that occur at the beginning of the perceptual process. As you can see in the A diagram of eye, the object for eye is further. So it is further, that's why our lens would change. Now, when the object comes nearer, the focus of the retina also changes to make it possible that the visual process is clear and the information is accurate. If these automatic relaxing and expansion of the lens does not happen, we will not be able to see objects clearly from a distance or to understand how distant they are. One way that our brain knows that something is very far is because physiological information from the lens, which is operated by the muscles on the side, tells कि अगर लेंस जो है वो फैल गया है तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा, और अगर लेंस सिकुड़ गया है तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर होगा लाइट के लिए. प्यूपल की इंफॉर्मेशन, ये फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी हमें बताती है कि चीज़ें हमसे कितनी दूर नज़दीक है और लाइट कम है या ज़्यादा है. इन द विजुअल सिस्टम देयर इज अ टी कप दैट यू आर वॉचिंग. टी कप का जो इमेज है वो उल्टा बनता है रेटिना पे. ठीक है, पहले वो प्यूपल के ज़रिए से लाइट से कॉर्निया के अंदर जो एक अपर्चर है उसमें से वो रिवर्स होके उल्टा इमेज बनता है आपके रेटिना पे, और वो पॉइंट ऑफ क्लैरिटी पे बना है. रेटिना वो पूरी लाइन है जो आपको आई बॉल के एंड पे नज़र आ रही है. अब ये जो इमेज है ये ऑप्टिक नर्व से आगे गया है, उसके फाइबर्स के ज़रिए वो लाइट जो है वो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, और इस तरह वो बैक ऑफ द आई में जो आपके पिगमेंट्स हैं उसके अंदर से फिल्टर होती है और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आगे जाती है. हम जैसे जानते हैं कि ये लेंस की और प्यूपल की जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमारे ब्रेन को पहुंच रही होती है, और उसके ज़रिए हमारा विजुअल सिस्टम ये जान जाता है कि चीज़ हमसे दूर है कि नज़दीक है.
The visual receptors and transduction is a process that only makes the vision possible. Transduction is carried out by receptors, neurons specialized for receiving environmental energy and transforming this energy into electricity. These are the neurons that carry the process of transduction. The receptors for vision are the rods and the cones. As we will see, the rods and cones have different property. However, during transduction, they both operate similarly. तो ये विजुअल सिस्टम में जो रॉड एंड कोन रिसेप्टर है, इनकी डिस्क जो है, इनका आउटर सेगमेंट जो है वो आप देख रहे हैं. क्लोजअप ऑफ वन डिस्क शोज दैट विजुअल पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है. क्लोजअप ये भी दिखाता है कि प्रोटीन ऑप्सिन जो है विजुअल पिगमेंट में मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस करता है डिस्क मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स. द लाइट सेंसिटिव रेटिनल मॉलिक्यूल is attached to the opsin at the place indicated. तो ये वो सेल्स हैं जिनके ज़रिए आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो ऑपरेट करता है, और इसके अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड एक्शन काम कर रहे होते हैं जो लाइट पिगमेंट्स के ज़रिए आपके विजन को पॉसिबल बनाते हैं.